कि कंपनीज एक्ट में क्या लिमिट है। कंपनीज एक्ट में लिमिट हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड, कंपनीज एक्ट 2013 में लिमिट हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड। इफ यू गो टू द सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 क्लोज जी, इसमें डिस्क्वालिफिकेशन इज मेंशन, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ए ऑडिटर, वहां पे मेंशन है कि हाउ मेनी कंपनी ऑडिट, हाउ मेनी ऑडिट a chartered accountant can do. It's mentioned, see, disqualification of auditors. A person who is in full time, this is disqualification. A person who is full time employer elsewhere, अगर आप कहीं full time employment है, you can't do the audit. Or a person or a partner of firm holding appointment as its auditor, if such person or person as at the date of such appointment or reappointment holding appointment as auditor of more than 20 companies. So it's clear, as per Companies Act 2013, you can't do the statutory audit of more than 20 companies. 20 कंपनी से ज्यादा ऑडिट नहीं कर सकते, अदरवाइज एज पर सेक्शन 143 1G आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। दिस वाज द लिमिट इन कंपनीज एक्ट 2013, बट लेटर ऑन बाद में इन्होंने एक नोटिफिकेशन से has excluded some companies. कौन कौन सी कंपनीज एक्सक्लूड करी है फ्रॉम 20 कंपनीज? फर्स्ट इज ओपीसी, 1% कंपनीज, वो इंक्लूड नहीं होगी। देन स्मॉल कंपनीज, देन डोरमेंट कंपनीज एंड प्राइवेट कंपनीज, बट प्राइवेट कंपनीज ऑल नॉट और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हुज हैविंग पेड अप कैपिटल लेस देन 100 करोड़, उनको इंक्लूड नहीं करेंगे, दीज आर एक्सक्लूडेड। अदरवाइज हाउ मेनी ऑडिट्स वी कैन डू एज पर कंपनीज एक्ट? 20 companies audit. This is the limit prescribed in Companies Act 2013. Now see how many audit we can do, company audit we can do as per ICAI guidelines. ICAI ने भी guidelines दिए, you can check it out. ICAI guidelines पहले tax audit chapter 6 में था, and this guidelines it's in chapter 8. But these guidelines are issued in 2008 when Companies Act 2013 was not there. So these were in accordance to Companies Act 1956. तो Companies Act 1956 के accordingly some guidelines है कि chartered accountant in practice how many companies that can do company audit we can do. तो see this, a member of the institute in practice, same lines है जो आप chapter 6 में थी, member of the institute in practice shall not hold and any time appointment of more than specified number of audit assignment of companies under section 224 and or section 228 of the Companies Act 1956. I told you it's according to Companies Act 1956, जब section 224 and 228 थे, तो उसके accordingly they have prescribed a specified number of audit assignment. What is the limit? First see, then we'll come to this. Specified number of audit assignment, it's as per council guidelines, specified number of audit assignment. In case of chartered accountant in practice or a proprietary firm of chartered accountant, 30 audit assignment means अगर मैं इंडिविजुअल अपने नाम से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सोल प्रोप्राइटरशिप और प्रोप्राइटरशिप में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, देन आई कैन डू मैक्सिमम 30 audits. 30 audits. It can be private companies or other companies. Okay, 30 audits. अब कुछ क्या include है, we'll see. Second, in case of a chartered accountant in practice, अगर chartered accountant in practice 30 audit assignment, ये firm के लिए बोल रहे हैं, per partner in a firm, whether in respect of private limited company or public companies. Means अगर आप individually practice कर रहे हो, either sole proprietorship or proprietorship, then you can do the 30 audit. 30 audits आप कर सकते हो. It can be private or public. और अगर firm में है then 30 per partner. तो यहाँ पे अगर 5 partners है in a firm, then 30 into 5 150. इसमें provided that out of such specified number of specified number of audit assignment, the number of audit assignment of a public company which paid up capital is more than 25 lakh or more shall not exceed 10. Means आप 30 तो कर सकते हैं, 30 audit assignment है, but maximum 10 for the public companies whose paid up capital are 25 lakh or more. Paid up share capital are 25 lakh or more. Now see again this clause in 8
a member of the institute in practice shall not hold at any time appointment of more than specified number of assignment, means 30 of companies under section 224 to 28. Then next, provided in case of firm of chartered accountant in practice and specified of number of audit assessment shall be constructed as the specified number of audit assessment for every partner. Means if for a firm per partner, means if a firm have 5 partner, then 150. Provided further, where any partner of firm or chartered accountant firm of chartered accountant in practice is also a partner of any same thing जो हमने वहाँ पे tax audit पे देखा था, if someone is I am the partner in ABC and also the partner in XYZ, then how my limit will include it? It's the total limit. Total limit either I can do in the firm ABC or the XYZ. It's the total aggregate for that firm also. Provided that further, where any partner of a firm or firm of chartered accountant in practice except one or more audit of companies in his individual capacity or in the name of the proprietary firm, the total number of such assignment which may be accepted by all firm in relation to such chartered accountant, same thing जो वहाँ पे आपका क्लोज था चैप्टर 6 में, सेम थिंग मेंशन्ड हियर. वहां पे आपकी 20 पर पार्टनर 60 पर पार्टनर की लिमिट थी, हियर इट्स द लिमिट ऑफ 30 पर पार्टनर. इट्स द सेम थिंग. Then specified number of tax, I told you 30 and not more than 10 for the publicly limited companies whose share paid up share capital are 25 lakh or more. Then some more explanations are there in computing the specified number of audit assignment. The number of audit of such company which he or any partner of his firm has accepted, whether singly or combination with any other chartered accountant in practice or firm of such chartered account shall be taken into account. Same thing वहां पे भी था clause, same clause. Tax audit में here is the same clause कि either you accept individually or in firm or the firm of chartered accountant, it shall be considered into one. It shall be considered shall be taken into the account. Then second same clause जो टैक्स ऑडिट में था एक्सप्लेनेशन में, ऑडिट ऑफ द हेड ऑफिस एंड द ब्रांच ऑफिस ऑफ ए कंपनी. अगर आप किसी कंपनी का हेड ऑफिस का ऑडिट कर रहे हो ब्रांचेस, देन इट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए वन ऑडिट असाइनमेंट हो गया. देन ऑडिट ऑफ मोर देन वन ब्रांचेस. अगर आप किसी फर्म में कोई कंपनी है उसकी ब्रांचेस है, सो मेनी ब्रांचेस आर देयर, देन इफ यू डू द ऑडिट ऑफ दैट ब्रांचेस, देन इट विल आल्सो कंसीडर वन ब्रांचेस पर पार्टनर, अगर पार्टनर साइन कर रहे हैं. देन नाउ द क्वेश्चन अराइज कि पार्टनर, नंबर ऑफ पार्टनर इन ए फर्म, व्हेन वी विल कंसीडर, कि कब कंसीडर करना है. लाइक इन एमईएफ हम कंसीडर देखते हैं 1 जन को क्या स्टेटस है, या 31 दिसंबर को हम पार्टनर से करके 1 जन का स्टेटस चेक करते हैं. नाउ हियर वी चेक ऑन द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ ऑडिट. सी द नंबर ऑफ पार्टनर ऑफ ए फर्म on the date of acceptance of audit assignment shall be taken into account. Okay, then चार्टर्ड अकाउंटेंट, सेम क्लोज इट वाज इन टैक्स ऑडिट चैप्टर 6 में भी था, यहाँ भी है. चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस वेदर इन फुल टाइम और पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर shall not be counted for the purpose of determining the specified number of audit of companies by firm of chartered accountant. Okay, then a chartered accountant, ये भी वहीं पे क्लोज है. चार्टर्ड अकाउंटेंट being a part time practicing partner of a firm, being a part time partner shall not be taken into account. means अगर कोई part time COP है, he or she is the partner, then it shall not be taken into account for the purpose of audit assignment of that firm. Now the next clause is a chartered accountant in practice, a chartered accountant in practice as well as both firm B or chartered accountant, a chartered accountant in practice as well as the firm of chartered accountants in practice shall mention a record of the audit assignment accepted by him or by the firm of chartered accountant or by any of the partner of the firm in his individual name or a partner on any other firm as far as possible in the following format. ये काउंसिल ने इशू करा है फॉर्मेट, यू कैन चेंज इट बिकॉज इट्स एज अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 1956. आप अकॉर्डिंगली कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली आप फॉर्मेट आप यू कैन क्रिएट इट. सीरियल नंबर, नेम ऑफ द कंपनी, रजिस्टर्ड नंबर, इट द सेम, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, बट ये चेंज हो गया डेट ऑफ विच फॉर्म 23 फाइल अंडर द रजिस्टर ऑफ कंपनीज एक्ट.